Good morning, everyone. I'll just wait for a few minutes for the people to join in, everybody to get started so that we start on this workshop on Java. Perfect. Thank you, Rahul, for the confirmation. Thank you, Chandra. Thank you, Ajay, Abhishek. Very good morning, everyone. Finding you people on Saturday morning. Sanivar. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शनिवार के दिन सुबह के 11 बजे आप लोगों को ऑनलाइन देखना, राइट? इट्स रियली अ रेयर सीन फॉर मी, सो आई एम रियली अप्रिशिएट द ऑल द सिंसियरिटी दैट यू गाइस हैव शोन टू बी प्रेजेंट इन दिस सेशन, एंड आई विल मेक श्योर दैट दिस इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग इन द टुडे सेशंस आई मेक इट काउंट। ठीक है। Meanwhile, the people are joining. Can you guys let me quickly, for those people who don't know me, let me do a quick introduction of myself. My name is Vishwa Mohan. For the last 16 years, I have been fortunate enough to work for all the dream companies that I wanted to work for. After passing out from IIT BHU, I have worked for the companies like Oracle, PayPal, Walmart, Amazon. I was leading the engineering at LinkedIn, and in my last company, I was the Chief Information Officer of FedExWala. So I have worked in all these companies, built scalable products. I have myself worked hard to crack the interviews of these companies. When I was working at these places, I have taken thousands of interviews. So this is one part of my profession. The second part is that I love teaching. I have taught at almost every edtech in the country and the globe. Unlike conventional YouTube के दीदी और भैया की तरह मैंने YouTube से चालू नहीं करा था. I thought that I'll first work in the industry, work hard enough so that I know something that I have built myself, and then I'll start teaching on a public platform. But all this time, I have been teaching at all the different edtechs. I have taught more than 1 million students. So for my love of tech and the teaching, I have started my own company called as aimers.ai. And now since the placement season is going on, I thought of bringing this workshop. ऐसे खूब सारे workshop और लेके आऊंगा, पर ये जो पहला workshop है is a very fundamental workshop in which I'm planning to cover the entire Java from the scratch. तो अगर आपने आज तक Java बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, या फिर आप ऑलरेडी Java को जानते हो, आप रिवाइज करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, आप इंटरव्यू के लिए रेडी होना चाहते हो, दिस इज द एप्रोप्रिएट वर्कशॉप फॉर यू। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन बिहार और अभी बैंगलोर में बैठ के मैं आपका ये सेशन ले रहा हूँ। सो दिस इज अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी, बट आई वुड लाइक टू नो अ लिटिल अबाउट यू पीपल एज वेल। तो आप में से क्विकली मुझे चैट में दिखाइए, मुझे कई सारे नाम दिख रहे हैं विच आर द एमर्स स्टूडेंट इटसेल्फ। तो अगर आप एमर्स के हो, आप डाल दो आई एम अ एमर्स स्टूडेंट, और यू कैन से दैट आई एम न्यू, आई एम नॉट अ एमर्स स्टूडेंट. And you also put from which city or the state that you are joining right now, and in which year of engineering you are. If you are a pass out, put pass out. Otherwise, put the year. That will help me understand the whole demography of this class, and I'll be able to customize the session well. Kolkata, Bangalore, Nagpur. Okay, okay. Amity, Pune, Kolhapur. Okay, very nice. Gujarat, Sumit. Perfect. So I think we have the people for almost every nook and corner of the country. Hi, Tarun. Hi, Aditya. Hi, Subham. Hi, Sneha. महाराष्ट्र, राजस्थान। कूल। आप में से कुछ लोग मुझे शायद अभी यूट्यूब पे देख रहे होंगे। आप यूट्यूब पे इसलिए देख रहे हो बिकॉज आपने ये फ्री वर्कशॉप का जूम रजिस्ट्रेशन आपने शायद खुद को रजिस्टर नहीं करा है। इफ यू वुड वांट कि आप भी जूम सेशन में हो, आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाए, इट्स बेटर दैट यू रजिस्टर एंड कम ऑन द वेबिनार. If you find registering is too tough, you can still watch it in the YouTube, but unfortunately, I'll not be able to take more questions from the YouTube live itself. Cool. Very warm welcome to all of you people, and I think now let's get started. Anyway, this session is getting recorded. तो आप सभी लोग जो सेशन को अटेंड कर रहे हो, इस सेशन के बाद if you need the recording, we'll make sure that you get it. And those people who couldn't join it for certain reasons, आपको भी ये मिल जाएगा अगर आपने इस सेशन के लिए खुद को रजिस्टर करके रखा हुआ है। ठीक है। Now let's quickly get started. But before we get started, I would like to set the rule of the house right. I know that this session
is free of cost for you people in terms of money. But क्या ये सच में free है? Actually no, because you'll have to spend some good amount of time today and tomorrow, and if needed we will have few more sessions. And today's modern world, time is equal to money. तो अगर आप invested हो इस course में, right, in terms of time, then it's your moral liability and responsibility to ensure that कि जो आपने invest करा है उसका आप at least कुछ outcome तो निकाल के आओ. और आउटकम निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है दैट आपको बने रहना है सेम एनर्जी के साथ फ्रॉम दिस टाइम टिल द टाइम दिस सेशन गोज ऑन. ठीक है ना? जब तक ये क्लास चलेगी आपको बने रहना है. यू हैव टू इंश्योर दैट कि यार जब तक मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, आई विल नॉट लेट विश्वा गो ऑफ. इफ यू जस्ट मेंटेन दैट interest, if you just maintain that curiosity throughout this next 2 to 3 hours, I assure you that this is the best investment of your time on a Saturday morning. ठीक है ना? सो कैन आई एक्सपेक्ट दैट सिंसियरिटी की जिस एनर्जी के साथ आप बैठे हुए हैं अभी बिगनिंग में, वैसे ही हम अगले 2-3 घंटे तक लगातार बैठे रहेंगे, एक ही करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा, कुछ नई चीजें होंगी, पता होगा तो उसको रिवाइज कर लेंगे, नई चीजें होंगी तो उसको सीख लेंगे. कैन आई एक्सपेक्ट दैट सिंसियरिटी पीपल? Can I expect that sincerity? A small promise that you will not leave up. I know that in the when you learn online, there are a lot of distraction. किसी का भी कभी भी फोन आ सकता है, right? बट आप खुद से थोड़ा सा अगर प्रॉमिस कर लो कि अगले 2 से 3 घंटे मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि we try to learn the Java the best way possible. I assure you that this is the best investment of time that you would have done. Cool. So with that, let's quickly get started. Yes, you will get this recorded, but दीक्षा recorded का फिर कोई मजा नहीं है. मैं बता रहा हूँ, अगर आप लाइव में नहीं समझ पा रहे हो तो रिकॉर्डेड में समझना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? तो लेट्स मेक श्योर दैट वी डू इट टू द लाइव सो दैट you ask the question from me and I'm able to sort you then and there itself. ठीक है, चलिए चालू करते हैं. लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन, 1 second. Zoom. Let me share my screen. Guys, are you able to see my screen? Can you quickly confirm? आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? See, sir, I'm not a big fan of PPTs. I normally consider myself as a damn engineer. I'm not an MBA कि मैं PPTs बना के रंग बिरंगे तस्वीरें आपको दिखाऊं. Normally, when I was growing up, even if some teacher used to come and read through the PPTs, I used to find it utterly boring. मैं नहीं चाहता कि जो मुझे आता है मैं आके आपको बता के चला जाऊं. I want to do things from the scratch in almost every session, whether it's online or offline. I try to read it from the and do it from the scratch itself. तो मैं ये blackboard use करने वाला हूँ. यहाँ पे जो भी चीज होगी मैं scratch से लिखूंगा. And we'll try to learn things together, not what I just want to go ahead and teach. So this is the blackboard which I'm going to make use of. I am Vishwa Mohan, right? And we are going to leverage this whole platform to start learning. Let's start with the very basic. Before we go and get started with the Java, let's first of all unfold the statement. I know that आप लोगों को ये पता हो, but I still want to make sure that we are all on the same page. If I have to go and explain what is a programming language, what is a programming language? Can you guys quickly tell me in a very simple words? You have to go and explain me in a word कि अगर 5 साल बच्चे को भी समझाना उसको समझ में आ जाए. What is a programming language, guys? Can you guys put that quickly into the chat? As per one of the studies, if you participate in an online session, your focus increases by 30%. So I would expect you people to keep on writing. ठीक है? बताइए मुझे, what is a programming language, guys? Anyone in the class? By which we can communicate to the computer. Is the interaction with computer, is a language to make okay, to explain language in the required language to understand the feelings, to communicate with the computer. Very nice. I think almost all of you are absolutely correct. अगर मैं थोड़ा सा context दे के समझाने की कोशिश करूं, so let's say that even for the humans, which is the most smartest species of the world, let's say that I'm from India and I know only Hindi. ठीक है? और मान लीजिए मैं चला गया जापान, राइट? और वहां पे मुझे देखी एक खूबसूरत लड़की, राइट? Now I speak Hindi and this girl speaks Japanese.
Can I still have some kind of communication? Can I still have some kind of relationship? देखो बॉलीवुड तो कहता है कि भैया लव हैज नो लैंग्वेज, but we are the students of computer science, we are the students of the logic, and I know that if I speak only Hindi और मोहतरमा सिर्फ अगर जापानीज में बात कर रही हैं तो मैं कितना भी स्टंट कर लूं, I might not be able to impress her. Fair? So even for the smartest of all the species of this world, we humans being the smartest, even if we have to talk and communicate, हमारे पास कुछ common language होना चाहिए. For example, the common language between me and this girl could be a language called as English. और अगर मुझे भी इंग्लिश आता है और मैडम को भी इंग्लिश आता है, then we will be able to communicate and do some kind of meaningful output. अब यहाँ पे बात तो दो स्मार्टेस्ट लोगों के बीच में हो रही थी. Now, in the world of computers, this is my computer. Computers are the dumbest creatures. They know only one thing. They only know the language of 0 and 1. As a human, we know the human languages. For example, you might know English, you might know Hindi. Now, if I want to have any kind of meaningful communication between the computers and me, there has to be some common language which I also understand and the computer also understands, so that I can give the instructions and make computer do work for me. That common language between the humans and the computers, which makes computer understand what we expect from them, उस common language को ही हम दोस्त यहाँ पे बोल देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही हम बोल देते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Am I clear till this point? Does it make sense? Everyone is clear till this point? Right? Awesome. अब दोस्त ये जो दुनिया में ना कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. फॉर एग्जांपल you have C, you have C++, you have Python, you have Java, you have Erlang, right? I just can keep on writing. There are so many thousands of programming languages. अब एक पहला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, सी द एंटायर ड्यूरेशन आई विल कीप इट इंटरव्यू फोकस्ड. सो विल टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट, राइट? सो व्हाट विल डू इज दैट विल टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट एंड देन वी टॉक दैट हाउ दिस कॉन्सेप्ट कुड बी आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, राइट? तो पूरे सेशन में बने रहना. मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. So we understood that there are so many types of programming language. What is a programming language? It's a common language between humans and computers. And there are so many types of the programming language. ये जितने भी टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, it could be categorized into the two types. One is called as compiled programming language and the second is called as interpreted or scripting programming language. जितना भी लैंग्वेज है इस दुनिया में, all the different languages of this world could be categorized into two: compiled programming language and interpreted scripting programming language. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू के लिए. नॉर्मली फ्रेशर से ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि दोस्त क्या होता है कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्या होता है इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर दोस. पहला, क्विकली, कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? सबसे पहले आप कोड लिखते हो, ठीक है ना? मान लीजिए आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिया, फॉर एग्जांपल जावा, और जावा में आपने कोड लिख दिया. जैसे ही कोड आपने लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कोड विल बी चेक्ड. बॉस, ऑल द रूल्स has been applied correctly? Is the code syntactically correct? Is the syntax of the code correct? All those check will happen, right? So what happens as soon as you do it, it will be typically checked for rules, syntax, right? और जब तुम रूल्स या सिंटेक्स के लिए आप इसको चेक करते हो, इस स्टेप को कहा जाता है कंपाइलेशन. कंपाइलेशन का मतलब होता है आप एक प्रोग्राम जो आपने लिखा है, कोड लिखा है, उसको आप चेक कर रहे हो. और ये कंपाइल करने के बाद ये क्या जनरेट करता है? ये जनरेट करता है बाइट कोड. बाइट कोड मतलब कि दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 0 and 1, ठीक है ना?
So first step is that you write the code. The second step is that the compilation happens. And the next step, what will happen? This byte code is converted into machine language and executed. तीसरा स्टेप में क्या होगा? एग्जीक्यूशन. द थर्ड स्टेप इज द एग्जीक्यूशन. ठीक है. तो compiled programming language happens in two steps. You write the code first, then it is compiled. It is being checked if every rule and the syntax for the programming language is right when you have written the code, and it gets converted into something called as a byte code. And then you go and execute this byte code in the machine, and the whole execution happens. So this two-step process. Am I clear, people? Does it make sense? Example of the compiled programming languages like C, C++, Java, ये सारे आपके compiled programming languages. On the other hand, let's say that if you write a programming language, first thing that you do is code, and then what happens? This is line by line interpreted. इसको आप ध्यान से इस word पे ध्यान दीजिएगा. Line by line interpreted and executed. स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है दोस्त? यू राइट द कोड एंड उस कोड को आप लाइन बाय लाइन, पहला लाइन आपने पढ़ा, उसको समझा, अगर वो सही है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर दूसरी लाइन पे जाएगा. दूसरा लाइन पढ़ा आपने, if it is correct then it will execute, otherwise it will go and throw error. So you write the code and it is directly executed. You know, this is the step 1, and then this is the step 2, which is direct execution. ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस प्रिंसिपल से एग्जीक्यूट होता है उसको हम दोस्त कहते हैं स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एन एग्जांपल ऑफ दैट कुड बी पाइथन, जावास्क्रिप्ट. These are all the examples of scripting programming language. Am I clear till this point? Does it make sense? Everyone is clear till this point? फिर से बता रहा हूं, compiled programming language happens in two steps. You write the code. Next step, उसका पूरा syntax check होगा if you've written the code well or not, and if it is all right, it gets converted into the byte code. और फिर फाइनली वो जाके एग्जीक्यूट होता है. इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल पाइथन और जावास्क्रिप्ट, इट हैपेंस इन वन स्टेप, right? The code line by line you interpret and then you try to execute. This is the what happens in the case of Python and JavaScript. Fair? Now a question for you. पहला क्वेश्चन तो ये आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि भैया कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स दे दो और स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल दे दो. हाउ आर दे डिफरेंट? Now if I go and ask you, out of these two languages, which will be faster out of the compiled and scripting programming language? आपको क्या लगता है? स्क्रिप्टिंग में 2 स्टेप है, कंपाइल में 1 स्टेप है. कौन सा फास्टर होगा? कैन यू गाइस पुट दैट इनटू द चैट? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ज्यादा फास्टर होगा या कंपाइल ज्यादा फास्टर होगा? दीक्षा कह रही है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ज्यादा फास्ट होगा. ओके. अब देखो, मोस्ट ऑफ द लोग कह रहे हैं कि जो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो फास्टर होगी. कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड. अब जो लोग स्क्रिप्टेड कह रहे हैं, मुझे पता है आप क्यों कह रहे हो. आप कह रहे हो कि भैया स्क्रिप्टेड में 1 स्टेप है और यहां पे 2 स्टेप है. चूंकि यहां पे 1 स्टेप है तो इस वजह से ये फास्टर होना चाहिए. आई थिंक यही लॉजिक लगाया ना आपने. Now let's try to see that which one is faster. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक रियल वर्ल्ड एनोलॉजी लेते हैं, और आज खूब सारे रियल वर्ल्ड एनोलॉजीज लेंगे ताकि आप भूलो ना. आप लोगों ने डोमिनोज में पिज्जा खाया है कभी? Have you guys eaten in Domino's? ठीक है. मान लीजिए 2 सिचुएशन है आपके पास. There is a situation 1. No, there is a situation 1 and there is a situation 2. In situation 1, let's say that there is someone at the counter and the pile of the people are coming to order it. Now इस सिचुएशन में जो डोमिनोज के काउंटर पे जो बंदा बैठा है उसने ऑर्डर लिया, और ऑर्डर लेने के बाद he himself goes and bakes the pizza.
और फिर उसके बाद फिर वापस आके दूसरे बंदे का ऑर्डर लेता है, फिर वापस आके तीसरे बंदे का ऑर्डर लेता है। तो पहले सिचुएशन है पूरे डोमिनोज शॉप में एक ही बंदा है जो ऑर्डर भी ले रहा है, और ऑर्डर लेने के बाद दौड़ के जाता है, पिज्जा बेक करता है, फिर वो जब हो जाता है तो फिर दूसरे बंदे का ऑर्डर लेता है और फिर दूसरे बंदे का पिज्जा बेक करता है। दिस इज द सिचुएशन वन। दिस सिचुएशन टू इन विच there is a dedicated guy to take the order, and there's a dedicated person for baking the pizza, right? And then there's a humans who are the customers who are there at the doorsteps. His job is to make sure that paisa sahi se le liya, sara paisa is correct amount and the proper billing has done, and then he gives this to this baking wala pizza, whose only duty is to go and keep on baking the pizza itself. आप मुझे बताइए, in which case पिज्जा जल्दी से डिलीवर होगा? विल इट बी सिचुएशन वन और इट विल बी सिचुएशन टू? कौन से केस में पहले पिज्जा डिलीवर होगा? पहले सिचुएशन टू। एवरीवन इज लाइंग, बिकॉज इस वाले केस में जो बंदा पिज्जा को बेक कर रहा है, ही डजंट केयर बिल हुआ है कि नहीं हुआ है। जब इसके पास आया, ही कैन डायरेक्टली गो एंड एग्जीक्यूट इट। सेम वे जब आपका कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग होता है, एग्जीक्यूशन कहां पे हो रहा है? इस वाले स्टेप में। एग्जीक्यूशन के टाइम मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि कोड सही से लिखा होगा कि नहीं होगा, वो पहले ही चेक हो चुका है। क्योंकि एग्जीक्यूशन के टाइम यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ चेक, दिस runs very fast. On the other hand, when you are using a scripting programming language, right? When you're using a scripting programming language, जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, यहां पे आप एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं दोस्त, और यहां पे आप चेक भी कर रहे हो, दोनों ही चीज करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि चेकिंग एंड एग्जीक्यूशन बोथ हैपेंस एट द सेम टाइम, दिस बिकम्स comparatively slow. Am I clear? Does it make sense? And that's why whenever you have to compare the speed, a compiled programming language runtime will always be faster compared to a scripting programming language. Am I clear? Does it make sense? Is everyone clear till this point? This is a very important question. Just take my notes. Every 3 out of 5 companies who will take interview in your campus will ask this question: what is a compiled programming language and what is a scripting programming language? Where okay, very nice. Now once we have done it, let's move on. So out of all the programming language on the market, the language that we are going to discuss today is Java. And Java is called as a compiled programming language. ठीक है, और हम इसमें थोड़ा सा और देखेंगे. The beauty is that it is also interpreted and it has something called a just-in-time compiler. तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे हम देखेंगे. But before we go there, I strongly believe that whether it's a life, real life, or the world of the programming, whenever you have to learn any topic, you should not blindly go and learn it. Whenever you're learning any topic and you want to do it well, you should always follow the sequence of what is that topic? Why should I go and learn this topic? And when you're convinced with both of these things, then how part becomes exceedingly simple. In this modern world, there are 1,000 things for you people to learn. So when you are sitting in this session, I'm telling you that, boss, please master Java for your placements. Answering this becomes very, very important. You should not learn Java because I'm telling you. You should learn Java if you really feel that, okay, yeah, इसकी जरूरत है और मुझे पढ़ना चाहिए. ठीक है ना? So now, the first question that comes to mind is, because out of all the programming languages on the earth, why didn't I do this session in Python? Why didn't I do this session in JavaScript? Why Java only? Right? So this answering this question becomes super important, that why Java? Or what is special in Java? Special in Java. Any thoughts, guys? Anyone in the group? आप में से काफी लोगों ने Java पहले पढ़ रखा होगा. Almost every standard book of Java, if you start the first chapter, it will tell you the reasons why you should learn Java. Why Java? Because the OOPS concept. OOPS is there in almost every language today.
जावास्क्रिप्ट में भी यूज हो सकता है, पाइथन में भी यूज हो सकता है, सी प्लस प्लस में भी हो सकता है। वाई जावा? So if you take any standard book, sir, and you pick any standard book of Java, in the first chapter they will tell you the reasons why you should go and learn Java, right? So they will give you the reasons. For example, it has something called as platform independent. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि दोस्त, अगर आपने कोड लिखा है मैक में, तो आप उसको विंडोज में रन करोगे तो कोई इश्यू नहीं होगी. इफ यू हैव रिटन कोड इन विंडोज एंड ट्राइंग टू रन ऑन अ लिनक्स सर्वर, इट विल नॉट हैव एनी इश्यूज. Second is that Java is very secure. Third is Java is easy to learn compared to C++. The fourth is that they say that Java is supports oops. This is one that many other programming languages that does that, right? The important thing about Java is that what else is, right? It's fast, all thanks to the just in time compilation. क्या होता है just in time compilation? We'll talk about it in a while right now, right? So these are the several other reasons. These are the main reasons which say that Java is robust, right? These are the reasons which you'll go and find in the first chapter of the book, which is good enough. But then any programming language that you go and take and you read that book, कोई भी प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस ले लो, सी ले लो, पाइथन ले लो, उसके पहले चैप्टर में हर किताब का ऑथर ये लिखा होगा दैट व्हाई दिस इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑन द अर्थ. सो नाउ दीज थिंग्स आर गुड इनफ. बट ये अगर मुझे, मैं प्रैक्टिकली बोलूं, इंडस्ट्री वाला बंदा हूं, कोड लिख के आया हूं, these are the points that's a good enough, but that is true for most every programming language on the earth. So what is special in Java? So I'll tell you my perspective that why I'm a big fan of Java. Sir, in the world of softwares, one hard reality that I have realized over a period of time is change is the only constant. In this world of IT, whether you are a software developer like you and me, whether you are a programming language, say for example like C++, or you are a software tool, for example SOAP, if you don't upgrade yourself, the industry don't take a second to dump you. आए दिन आप लोग रिसेशन में फायरिंग की बात सुनते रहते होंगे. See, when I completed my engineering, मेरे जो दोस्त थे सिविल वाले या मैकेनिकल वाले, right? उनके साथ क्या होता है, when they keep on growing, they learn from their work, and as they age, as they become more senior, they get more money and they get more respect. Unfortunately, in the field of the softwares, if you don't keep yourself upskilled, you don't keep yourself upgraded, as you grow, as your age increases, that you cannot keep the pace with the IT, the industry will just throw you out, unfortunately. See, I'm not here to show you the only the greener side of it. I just want to make sure that all of you sitting here understand that what you are buying for. IT sector is boss very challenging. When I started, no one was there to guide me there. I felt कि आईटी में इसलिए जाते हैं बिकॉज वहां पे एक मैकबुक लेके एसी कमरे में बैठा हूंगा, पूरी दुनिया की शेयर करूंगा, दैट्स हाउ द लाइफ वुड बी. But the reality is far from there. When you are in a software field, you become a part of the intense competition where you have to study every day. Even today, I study at least 1 hour every day to make sure that आप जो कॉलेज में बैठे हुए हो, आप जब इंडस्ट्री में आओ तो मुझे धक्का मार के भगाना दो. So in order to make sure that I'm keeping in pace with you people, I still read. And that's everyone who wants to make it big in the IT will have to do. Right. So this is the challenge. Java as a programming language has understood this better than any other programming languages of the earth. Example के लिए पूरी दुनिया अभी भी Java 8 या Java 11 पे ही काम कर रही है. Most of the industries. And Java already have launched Java 23 and 24. Right? It has got Java
23, 24 has already got launched. So Java has understood this change. I'll tell you, when the Java came in, it was predominantly a object-oriented programming language 5, 7 years back. At that time, people started criticizing Java, that Java, you are slow, you are verbose, you are not scalable. ऐसा लोगों ने criticize करना चालू करा, ऐसा था नहीं, but people started criticizing. And on that context, a new programming language came up called as Scala, which was a functional programming language. But before Scala could put its foothold strong, Java ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिलीज किया Java 8, in which Java brought the concept of functional programming. They added a concept called as lambdas, functional interface, and made sure that before even Scala come into the action, Java still was capturing the entire ecosystem. And that's the reason why the Scala could never make it big. So Scala has been very futuristic, right? You are still, the world is working on Java 8 and 11. The latest release of Java is very futuristic, which is trying to get the powers of a scripting language in the Java itself. So the first biggest reason why I feel Java is very relevant today, it will stay relevant in many, many coming years in the future, is that Java is futuristic. It's very flexible. It knows that change is the only constant. That's number one. Right? So Java is futuristic. This is my first motivation for it. Second is that in Java, you can build anything. Build anything. अगर आपको जावा आता है तो जावा में आप कुछ भी बना सकते हो दोस्त. आप उसमें बना सकते हो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, एंड्रॉइड पूरा जावा बेस्ड है, राइट. आप आईओटी डिवाइसेस में काम कर सकते हो, आप राइट क्रिप्टो के वर्ल्ड में जावा में काम कर सकते हो. इवन एआई एमएल का काफी अच्छा खासा सपोर्ट आता है. इन द बिग डेटा you have a support for the Java. So with Java, you can almost build anything. Third is that all the big companies, all big giants, whenever they have to build a scalable applications or enterprise applications, the language of choice is again Java because of its high scalability and high robustness and the high security features. So if you're trying to make it big, work in any good product-based company, the top 10 companies of this globe, the very high chances that the stack in which these companies will be working will be Java itself. So these are my biggest motivation, because of which I feel almost everyone who's sitting here in this class, if you have decided that I have to learn Java, you have made one of the best decisions of your life, because this is a complete language. And when you learn Java, you learn so many concepts which helps you evolve as a better software developer. Am I clear, people? Does it make sense? Are you guys convinced? Everyone? Cool. So we have understood so far Java. And what are those two things? This is what and why. Fair? Am I clear till this point? Okay. Now comes the part of how. So we have to go and start the learning journey of Java. और ये जो learning journey of Java है, उसको हम थोड़ा practical रखेंगे दोस्त, right? It will be slightly different from how you do things in the college. Normally, when you are in a college, to learn any programming language, you get at least multiple months. है ना? आपको एक सेमेस्टर में एक लैंग्वेज सीखना होता है, आपके पास लग्जरी होता है टाइम का. And normally what you do is that you typically in these things, you go and take a book and you do it like this, chapter 1, then you do the chapter 2, then you do the chapter n, and like you go and complete. In most of the cases, we are never able to complete all the chapters. By the time we reach the last, we would already forgotten the chapter 1 itself. This is a conventional way of learning a programming language, which is very slow.
which I feel is not very effective. Because when you go to let's say that after these sessions next year, when you're going to a company, right? And this company, as soon as you join, they say that boss, you have to go and work on a programming language called as Erlang. अब Erlang तो आपने सुना ही नहीं था कॉलेज में, आपने सीखा ही नहीं था. अब अगर आप अपने कंपनी वाले को बोलोगे कि बॉस अगर मुझे Erlang पे काम करना है, you give me 3 months and then only I'll be able to write code, will he allow you? He will not. He will say that boss, you only have 3 days, pick up this language and get started with the work. So when you go out in the industry, in the different companies, you might have to work for the different programming languages. For example, when I started in Oracle, I was working in Java. Then I moved to PayPal, where I was working in Node.js. Then I moved to Walmart Labs, where typically I was working again in multiple languages, Python, Node.js, Scala. Then I moved to Amazon. I was working again on Java and the Python. Then I came in LinkedIn, where I was working on Erlang. So all these companies, if you have to be open about working in any company, you have to be flexible about learning new languages. So if you go and follow this approach of taking a book or a tutorial, going chapter by chapter to learn a programming language, is a very boring and an old way of learning things. It's not very efficient. What can I do so that I learn any languages fast? उस तरीके से को देखते हैं. So to understand this, typically, I feel that almost every language on earth, the learning pattern is same as human evolution. जैसे ह्यूमन इवॉल्व करता है फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल दिस एडल्टहुड, उसको अगर आप एनालाइज करो तो उसी सेम पैटर्न में आई हैव टू गो एंड लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेट मी प्रूव यू दैट. Normally, how the human evolves, boss? The very first step is that the human is born in hospital. Correct? और हॉस्पिटल्स में जन्म लेने के बाद जब वो घर आता है कुछ दिनों के बाद, राइट? So first of all, what you do is that you introduce to the different types of relatives, right? आप बोलते हो देखो ये आपके पापा हैं, ये आपकी मम्मी हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, right? So you first do is that you go and do the introduction of different types. When the child further grows, what you do is that you do teach different types of comparisons. आप बोलते हो मम्मी ज्यादा प्यार करती है या पापा, ये गर्म है या ठंडा है, this is big, this is small, right? Those kind of comparisons that you go and teach. When the child further grows up, then you bring in this child something called as conditions, right? All the time when I was growing up, my mom used to blackmail me. इस बार अगर फिर से फर्स्ट आए तुम, तुम्हें ये टेबल ला के देंगे, अगर तुमने ये खाना खा लिया तो शाम को चॉकलेट खिलाएंगे, right? So those kind of conditions comes into the life. When you grow further up and you keep on doing the same thing again and again, सुबह उठा स्कूल चला गया, शाम को आया खाना खाया, फिर खेलने गया, फिर रात को होमवर्क किया, फिर सो गया, फिर अगले दिन सेम चीज, right? After when you get frustrated of doing the same thing again and again, what you say that life loop में फंस गई है ना? Once you become little more adult, right, you start optimizing thing. आपको लगता है क्या मैं एक चीज करके उसको बार बार reuse कर सकता हूँ instead of doing the same thing again and again. So you start understanding the importance of reusing things. आप थोड़ा और बाहर निकलते हो और आप आ जाते हो कॉलेज में जहां पे हो आप अभी, राइट? जब आप कॉलेज में आते हो, दैट्स वेयर यू मीट न्यू पीपल. आपके अंदर कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आप रिलेशनशिप्स बनाते हो यहाँ पे आके, है ना? यू मेक द रिलेशनशिप्स. आप जब कॉलेज में आ रहे होते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू आल्सो कमिट सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स. और मिस्टेक्स ऐसे होने चाहिए जिसको कि आप हैंडल कर पाओ, right? You don't have to commit the crime, but you are all free to commit mistakes which could be handled easily. और उसके बाद जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हो चीजों को सीख के, then you are open to explore the entire world, new company, new place, new country. So you go and explore new areas. Am I clear? Does it make sense? This is how the human life evolves.
Now if I take any programming language, say for example मुझे अगर जावा सीखना है, तो जावा को सीखने के लिए सबसे पहले मुझे, जैसे एक इंसान जन्म लेता है हॉस्पिटल में, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो एंड इंस्टॉल जावा on my machine because I have to start learning it. Once that is done in any type of programming language, the first thing that we have to understand is about what are the basic data types. कौन कौन के डेटा टाइप जो होंगे वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्टेड होगा, न्यूमेरिकल डेटा टाइप, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, वो सारे डेटा टाइप्स वी हैव टू गो एंड अंडरस्टैंड. उसके बाद उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपैरिजंस वगैरह करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए क्या क्या ऑपरेटर्स अवेलेबल है, दिस इज व्हाट आई हैव टू गो एंड लर्न. So I have to start installing Java, then I have to understand the Java types, data types, then I have to understand the operators. Then conditionals are a very common thing in the real life, and so is in the world of the programming. So to help with the condition, we have something called as if-else block, right? We have to master the if-else block because that's how we do the conditions in the world of programming. वो करने के बाद चीजों को अगर मुझे रिपीट करना है, एक ही चीज को बार बार एग्जीक्यूट करना है, so for that I have a loop concept like for loop or while loop. Then if I have to go and make use of reusing things, then I have a concept called as functions. जब बात रिलेशनशिप की आएगी, I have to understand the concept called as OOPS concept, object oriented programming. When it is about mistakes and handling, we have something called as exception handling. Right? And this explored the new areas, new data structures. So you can go and talk about the data structures, or in the case of Java, you go and call it as a collection framework. This is a normal way you have to follow for learning any programming language. Now, what we'll do is that instead of following a conventional style of learning of a book or through the videos, we're going to follow this approach. So we'll first of all start about these things. Then we go and talk about the different types of variables, data types. Then we go and talk about the operators. Then we go and talk about the conditionals. Then we go and talk about the loops. Then we talk about the functions, OOPS concept, exception handling, and collection frameworks. And with that, I think we'll be knowing enough to crack any kind of Java-based interview for the freshers. Am I clear? Is the roadmap clear to you people? Convinced, guys? Does it make sense? Yes, no? Bolo dost. Someone is asking, what is the starting salary of a Java developer? It's very subjective and it depends. Koi company mein, there are few companies that I know, the top companies who pay the starting salary of 60 lakhs, 70 lakhs as a fixed. And there are few companies who are paying you somewhere around 2.5 to 3.2 lakhs also. It's very dependent. So you have to master it at the extent that you ask and you get that salary. ठीक है? आगे चालू करें sir. Are we all set to get started? By the way, today is to all my Muslim friends, happy Bakrid. आप लोग अच्छे से मनाइए ये आज के दिन, आपने टाइम आउट निकाल के अगर ये आप सेशन अटेंड कर रहे हो, रियली अप्रिशिएट दैट, राइट? एंड आई होप यू गाइस हैव द गुड टाइम. Ashutosh, how to get the interview opportunities, ये जो additional questions है, I'll take it at the end itself, don't worry. ठीक है, अभी इस पे फोकस करते हैं. आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन करके रखो, जो भी आपके करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, I'll take all of those questions going ahead. ठीक है, तो अब चालू करते हैं सर. सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहली चीज, एक सेकेंड सर मेरे को देना आप, मैं एक बार देख लूं क्या चल रहा है यूट्यूब में. कूल. सो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे, अगर मुझे जावा को सीखना है, तो ये मान लीजिए मेरा लैपटॉप है. इट कुड बी विंडोज और इट कुड बी मैक. अगर मुझे जावा सीखना है तो मुझे इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी जावा इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम्स? अभी आदित्य उसी की बात करेंगे. How many of you have? Everyone, I am hoping all of you will have the Java already installed in your system. If not, please do it. ठीक है ना? This is one of the easiest step. अगर आज के दिन में मैं आपको ये सिखाने लगूं कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, तो मैं अपना ही नहीं आपका भी तौहीन कर रहा हूँ. तो I know that this is the easiest step. I don't want to waste my time in telling you. I think all of you would have already installed.
जब आप जावा को इंस्टॉल करते हो ना सर, तो तीन टर्म्स आते हैं उसके साथ, राइट। एक होता है JVM, एक टर्म होता है JRE, और एक टर्म होता है JDK। ये तीन टर्म्स आते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंस्टॉल जावा। और ये टर्म्स थोड़े ट्रिकी हैं, ट्रिकी, एंड दैट्स व्हाई दिस समटाइम बिकम्स द इंटरव्यू फेवरेट, इंटरव्यू फेवरेट, बिकॉज दे नो दैट कहां पे बच्चों को फंसाना है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज टर्म्स वेल, सो दैट आज के बाद आपको ये तीनों टर्म्स कभी भी सताए ना, ठीक है ना। तो सबसे पहला टर्म है JVM। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो सर, वर्चुअल है यहां पे वर्ड, मतलब कि इट डजंट फिजिकली एग्जिस्ट। वर्चुअल मतलब कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इट जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, इट जस्ट अ एब्स्ट्रैक्शन, राइट। So JVM just gives the conditions in which Java code has to be executed. Am I clear? Does it make sense? So Java क्या है? Java JVM is basically the Java virtual machine. वर्चुअल मशीन है मतलब कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स अ वर्चुअल थिंग, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट एन एब्स्ट्रैक्शन which gives you the conditions in which the Java code should be executed. Yes सुबोधि, मैं Eclipse यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं देख लिया कि भैया JVM जो है इट्स अ एब्स्ट्रैक्शन, it just tells the condition in which Java code should be executed, ठीक है। अब JVM के स्पेसिफिकेशन का जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है, वो क्या है सर? वो है JRE। JRE स्टैंड फॉर द जावा रन टाइम एनवायरमेंट। JRE क्या है? जावा रन टाइम एनवायरमेंट, वो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है। सो दिस बेसिकली नोज हाउ टू एग्जीक्यूट द जावा कोड, right? It physically exists, it's physically exists, right? फॉर एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड एनालॉजी अगर मैं दूं, राइट, तो आप लोगों ने शायद इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा होगा, आजकल एक बड़े फेमस ज्ञानी हैं, राइट, स्वामी परमानंद जी, राइट। तो वो ज्ञान देते हैं, दे टेल दैट दिस इज द बेस्ट वे टू लीव योर लाइफ, राइट। और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्या है? वो है विराट कोहली, राइट। आपने देखा कुछ दिन पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वहां पे गए थे, तो उन्होंने बोला कि बॉस ऐसे लाइफ जिया करो, ऐसे लाइफ में चीजें किया करो, उन्होंने स्पेसिफिकेशन दे दिया। विराट कोहली ने उस चीज को खुद से जिया, उस चीज को फॉलो करा, तो वो हो गया JRE। सो JVM इज जस्ट द स्पेसिफिकेशन, इज अ वर्चुअल थिंग, इट टेल्स हाउ द कोड हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। JRE इज द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ JVM, इट एग्जीक्यूट्स द जावा कोड, इट्स फिजिकली एग्जिस्ट। एम आई क्लियर? डजंट मेक सेंस? बोलो हाँ या ना। So Swami Parmanand ji is JVM. He tells how the life has to be done. The person who goes there, for example, Virat Kohli, is a JRE, actually implements that. Right? And then there is something called as a JDK. Right? JDK stands for Java Development Kit.
So Java Development Kit comprises of JRE plus some additional tools. For example, it supports compilation of the code. And for the compilation, you have something called as a Java C, right? It can help you to go and archiver, for which you something called as jar, right? So this has some additional tools. Java Development Kit is the entire toolkit which you need to build the entire ecosystem of that softwares using Java. So JDK comprises of Java runtime environment for running the Java code, and additional tools like compiler, achiever, etc. So if you take that example of JVM and then JRE and then JDK, if I give you a real world analogy so that you don't forget, this could be the Swami Parmananji, right? The JRE could be say like Virat Kohli, who came and actually implemented these things, and JDK is that it is Virat Kohli plus all the other ecosystems. So this could be say the RCB. Am I clear? Does it make sense? You'll get the session recorded on the AMOS platform, Sakshi, right? Since you are already registered, you will have your credentials. We will send you the recorded session also. But my suggestion to you people is that don't rely on the recorded sessions. Watch it live. Is everyone crystal clear on JVM, JRE, and JDK? People, yes, no. Can you guys quickly tell me? Balo, Arshay, is everyone clear on this till this point? What is JVM? What is JRE? What is JDK? आगे बढ़े. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए in the beginning itself, because most of the people I have seen 99% of the people when they are starting Java, they are confused. What is JVM, what is JRE, and what is JDK? ठीक है. Now, since we have done, I have curated few questions which is normally asked from the student. पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो ये कह रहा है, why is Java called platform independent if JVM is platform dependent? देखो जावा को रन करने के लिए स्पेसिफिकेशन जो देता है वो JVM देता है, राइट? एंड JVM का इम्प्लीमेंटेशन है JRE. JVM और JRE जो है उसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. जावा को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. एनीबडी टेल व्हाई? यस सुवादीप, दैट्स व्हाट इट इज, बट व्हाई डू वी कॉल दिस? कैन यू गाइस हेल्प मी आंसर द क्वेश्चन? JVM जो भी मैं बताया वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है. C प्लस विंडोज के लिए अलग JVM होगा, मैक के लिए अलग JVM होगा, See, the answer to this question is that let's say that if I have a laptop which is Windows, and if I have a laptop which is Mac, and if I have a laptop which is, say, for example, Linux. Now, if I have to go and install JRE here and JVM here, this has to be of another version. Here, if I have to go and install, I have to use another JRE or JVM, which is a version 2. And I go and install that, it's a JRE and JVM, which is of 3. For the different operating system, you need to have the different JVMs or JRE to be done. But when the code is executed, it gets converted into the bytecode. This bytecode that you have will be executed here also. You can go and make use of here also, and you can go and make use of here also. And that's why the JVM or JRE is platform dependent, but Java code which you have written, once it is converted into the bytecode, this could be interpreted the same way whether you're running on Windows or Mac or Linux, and that's why Java is platform independent. Very nice, Rahul. Very nice. Am I clear? देखो रन करने के लिए you need JRE. JVM में रन नहीं होता राहुल. JVM is just a specification. To run a Java code, you need to have the JRE.
Okay, I'm again repeating this. Now, what I'm trying to say is that, boss, that let's say that there are three laptops, right? Three machines. I'm again repeating, guys, please pay attention, right? This is Windows, this is Mac, एंड दिस इज लिनक्स. अगर आप चाहते हो कि जावा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो तो यहाँ पे मुझे पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, मुझे जेआरई यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. अब विंडोज का जेआरई अलग होता है, मैक का जावा रन टाइम एनवायरनमेंट दूसरे तरीके का होगा, लिनक्स का जावा रन टाइम एनवायरनमेंट तीसरे तरीके का होगा. अब एक बार जेआरई तीनों जगह पे इंस्टॉल हो चुका है एंड मान लीजिए मेरे पास एक कोई जावा कोड है, जावा कोड, और कंपाइल होने के बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, बाइट कोड. Now the same bytecode, whether I go and run it here or I can run it here and I can run it here itself. So executing the Java code is platform independent, but the JRE or the JVM which is there, it is platform dependent. That's how, and this is what it means. Ashwani ji, is it clear? Ratni, Ratikant, Raut, am I clear till this point, people? Yes, no? Very nice. Awesome. Let's try to move on. एक और क्वेश्चन देखते हैं. एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू रन अ जावा डॉट जावा फाइल इन जावा, एक्सप्लेन द फ्लो. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. जावा क्या है? जावा एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो जब भी आप कोई जावा फाइल है, मान लीजिए आपका फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है. इसको आप सबसे पहले क्या करते हो, आपका होगा यहाँ पे कंपाइलेशन. जब कंपाइलेशन होता है तो you go and check all the rules, syntax वगैरह, if everything is all right, and if it is successful, then it gets converted into hello world dot class file, right? इसको ही हम कहते हैं बाइट कोड. This is the bytecode file. Once it is done, then at the next step, it is interpreted and executed in memory. यहां पे आपका इंटरप्रेटेड भी होगा और यहां पे भी एक और चीज आती है, इसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन, ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो एंड रन अ डॉट जावा फाइल, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो एंड राइट द कोड इन डॉट जावा, it is compiled, gets converted into hello world dot class, which is a bytecode, and then you typically go and interpret it in just in time compiler occurs and then the execution happens. अब ये वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा एक बार और डिटेल में समझते हैं, बिकॉज यहाँ पे द इंटरव्यूअर कैन गो डिग डीपर and confuse you that what is interpretation, what is just in time compiler, right? So मान लीजिए there is something called as file.java, right? Now once you have compiled this, you have compiled this using javac command, it becomes file.class, right? And this typically has the byte code. Okay, अब ये बाइट कोड कुछ लिखा होगा, मल्टीपल लाइंस होंगे और ये सारे विल बी लाइक इनक्रिप्टेड बाइट कोड्स. अब जब ऐसा हो रहा होता है ना सर, तो क्या होता है, फर्स्ट लाइन पे आएगा एंड दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड, देन अगेन यू कम टू द सेकेंड लाइन and then again this line will be executed. So line by line the execution starts happening in the memory. This is called as interpretation. This is called as interpretation. From the byte code, line by line, first line, then second line, then third line, it will be interpreted and it will be executed. This is called as interpretation that happens. But in this entire code, there will be certain codes. For example, loop. For example, function calls. ऐसे कुछ कोड होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे. अब जो कोड बार बार रिपीट हो रहा है उसको बार बार रिपीट करके एग्जीक्यूट करना
is time taking. So what it does is that for all those codes which are repeating, उसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके execute once and save it as cache. जो कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, फॉर एग्जांपल लूप अगर होगा तो बार बार कोड एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन कॉल है मल्टीपल बार कॉल हो रहा है, तो जो कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है उसको एक बार एग्जीक्यूट करके सेव करके रख लेते हैं, ताकि अगली दफा जब एग्जीक्यूट हो यू डोंट हैव टू इंटरप्रेट इट, इट बिकम्स फास्टर. इस वाले स्टेप को हम कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन. And this just in time compilation makes things faster in Java. Am I clear? Does it make sense, everyone? So typically what happens, again, if I repeat, you have .java file. Just give me 1 second. So you have something called a .java file. Then that's compiled to the .class file. And then it happens interpreter plus just in time compilation. This is the phase in which the whole execution happens. Everyone is crystal clear till this point? This is a super critical point. There's a very high probability that this question might be asked in your interviews. Where, sir? Let's move further. Now, a question for you people. We have been talking about JVM, JRE, JDK. Now, a question for you people is that, can a Java program run without JDK? Why or why not? Can you guys put that into the chat? बिना JDK के क्या मैं Java program run कर सकता हूँ? Why or why not? Subhadeep is saying no, Ratikant is saying no, Ritesh is saying no, almost everyone is saying no. Yes, very nice, Surya. देखिए, विथाउट जेडीके मतलब मेरे पास जेडीके नहीं है. विथाउट जेडीके आई कैन रन अ प्रोग्राम. इफ आई हैव JRE, अगर मेरे पास सिर्फ JRE है तो मैं प्रोग्राम को रन तो कर सकता हूं, पर विथाउट जेडीके आई कांट compile the program. What it means that कि अगर आपके पास डॉट क्लास फाइल है, तो इसको रन करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए JRE and it will be executed. पर अगर आपके पास डॉट जावा फाइल है तो पहले आपको कंपाइल करना होता है. कंपाइल करने के लिए आपको चाहिए होता है जावा सी, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? Java C is present in the JDK. So if you don't have the JDK, you can't compile. Am I clear? Does it make sense? So if the people ask you, if you don't have JDK, can you run the program? Yes, I can run the program if I have the dot class file and I have the JRE. But I cannot compile it because compilation करने के लिए तो JDK चाहिए, because JDK के पास ही extra tool है, which is Java C. Am I clear to everyone? To all those people who have been saying flat yes and flat no, there is a lot of in between, and this is the right way of answering this question. Am I clear to this point? बताइए दोस्तों. Fair, everyone. Let's move. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. व्हाट रोल डज जस्ट इन टाइम कंपाइलर प्लेज इनसाइड द JVM. मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जो आपका बाइट कोड है, मान लीजिए बाइट कोड आपका इस तरीके का है, लाइन बाय लाइन. नॉर्मली क्या होगा, पहले लाइन पे आप आएंगे, ये इंटरप्रेट होगा एंड एग्जीक्यूट होगा. फिर आप दूसरी लाइन पे आएंगे, ये इंटरप्रेट होगा
और एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब मान लीजिए आपके पूरे कोड बेस में देयर फ्यू लाइंस विच आर रिपीटेड, जो बार बार आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव रिटन लूप्स और इफ यू हैव रिटन फंक्शंस, अगर कोई कोड है जो बार बार लिखा गया है आपके कोड बेस में विच इज रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स, सो व्हाट विल हैपन, यू विल एग्जीक्यूट वंस and you go and save its outcome, so that next time the same line happens, you directly return the outcome, you don't have to execute it again, right? When you do this, this is called as just in time compilation, which makes things faster. Am I clear? Does it make sense? I'm again repeating this, I've again repeated this. Is everyone clear till this point? एक बार फिर से कर रहा हूं, ध्यान से सुना करो। जावा में क्या होता है, आपके पास डॉट जावा फाइल आया, डॉट जावा फाइल गेट कन्वर्टेड टू डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल कुछ इस तरीके की होगी, मल्टीपल लाइंस ऑफ द कोड। ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, पहला लाइन आया, इस लाइन को हम इंटरप्रेट करेंगे और इंटरप्रेट करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। फिर से अगला लाइन नॉर्मली क्या होगा, इंटरप्रेट होगा और फिर उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा वो, ऐसे करके वो एक एक करके भर रहा होगा। अब ये जो पूरा लाइन ऑफ कोड है उसमें से कुछ ऐसे लाइंस होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। रिपीट कब होगा, जब आपने लूप लिखा होगा, या फिर आपका फंक्शन कॉल होगा, या फिर ऐसे लाइन जो बार बार आपने लिखे होंगे कोड में। Now for all those lines which is repeatedly coming, same line is being executed again and again. In that case, a better approach would be that you go and execute once and then save it. And next time, whenever it has to be executed, you don't have to re-execute it. You just return the final result, right? This, when you do, this is called as just-in-time compilation. And doing this will make the speed faster. Format of data in the dot class file is in a bytecode. I'll show you when we do this. Okay. Am I clear to this point? Yes, JIT works automatically, Rahul Verma, right? In the latest versions of the Java, JIT gets triggered automatically. You don't have to do anything. It's an optimization which Java people have given you. अगला क्वेश्चन, कैन वी हैव मल्टीपल जेवीएम्स रनिंग ऑन द सेम मशीन? कहने का मतलब यह है कि दोस्त मान लो आपका एक लैपटॉप है, क्या इसमें मल्टीपल जेवीएम्स, जेवीएम 1, जेवीएम 2, जेवीएम 3 रन हो रहा होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? Devesh is saying no, Nakul is saying no. How about others? What do you guys think? Anshu is saying yes. Maybe not sure. देखो, every Java process in your computer runs on a separate JVM. कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने लैपटॉप में मल्टीपल जावा प्रोग्राम्स, प्रोग्राम 1, दूसरा एक प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 अगर आप चला रहे हो, so each program has its own JVM. Each program needs its own Java virtual machine. Each program needs its own JVM. And typically JVM, when I say, it means that it needs their own JRE, which is the physical implementation. So the answer is yes. On a machine, multiple JVMs is very normal to have, and you can have the multiple instances of the JVM on a given single machine itself. The answer is yes. Am I clear? Anuj, Aditi, Dinesh, Satya, everyone in the class? Fair? So जितने भी जावा के प्रोसेसेस आपके सिस्टम पे चल रहे हैं, वो सारे अलग अलग जेवीएम्स पे रन होते हो, ठीक है? Debates, what I'm saying is that
Even a laptop, if you're running multiple Java application, different types of application, every application will be using an independent instance of a JVM. So the answer is that on a one single laptop, there could be multiple instances of JVM running at the same time. Let's move further. तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो गए. तो पहला जो पार्ट था हमारा, which is Java setup, is done, right? The next thing that we want to talk about, the next concept is that we're going to talk about around variables and data types and operators, right? इसके बारे में अब समझना चालू करते हैं और lots of hands-on code that we'll go and start looking at. ठीक है. सबसे पहले एक कोड लिख लेते हैं सर. So the ID that I'm going to make use of in this session is Eclipse. Eclipse why? Because it is free to use and most of the people are already handy with that. But you guys can feel free to use any ID of your want, right? If you want VS Code, you want IntelliJ, feel free to use anything that you want, you know. तो मैं अपना एक Eclipse खोलता हूँ और I hope you guys are able to see my Eclipse. मेरा Eclipse दिख रहा है आप लोगों को सर? Is my Eclipse visible to you guys? Is the font clear to everyone in the class here? तो ये this is how a Java conventional Java class looks like. What is the class? What is an object? हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. But this is how the conventional Java class looks like. अभी high level पे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा. उसको बस आप उतने ही तरीके से इसको ध्यान देना. And then we'll make progress and we'll slowly learn all the concepts, right? So if you see here on the screen, I have few keywords. For example, I have this hello world. This is the name of the class. Anything in Java that you write has to be written inside a class. चूंकि ये क्लास है तो मैं कीवर्ड यूज करता हूं क्लास. और ये जो पब्लिक है वो बस ये बताता है कि कौन कौन इसको देख सकता है. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेस मॉडिफायर. एक्सेस मॉडिफायर, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. जावा में मल्टीपल एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं. इट कुड बी पब्लिक, इट कुड बी प्राइवेट, इट कुड बी प्रोटेक्टेड एंड इट कुड बी डिफॉल्ट. एंड लोग इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि कोई इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है. When I was interviewing for Microsoft, I was asked on this question that what is the difference between public, private, protected, and defaults. We're going to discuss that in our session going ahead when we make the progress. But ये जो public keyword है, is the access modifier. इस क्लास के अंदर जो आपको दूसरी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है वो देख रही है, इसको हम कहते हैं मेथड्स. जावा की दुनिया में फंक्शंस को हम मेथड्स बुलाते हैं, राइट? तो ये आपको दिखाई दे रहा है एक मेन मेथड है. ये मेन मेथड है. दिस इज द स्टार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन. दिस मेन मेथड इज द स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कोड. अगर किसी क्लास में ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होगा तभी ही कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा. जस्ट लाइक इन सी यू हैव अ मेन मेथड, इन जावा यू हैव अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड. और जावा के अंदर अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना है तो मुझे ये लंबा सा सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, which is system.out.println. क्या है सिस्टम, क्या है आउट, क्या है प्रिंट, डॉट डॉट क्यों यूज कर रहे हैं. थोड़ा इत्मीनान रखिए, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको. पर अभी के लिए आप बस इतना सोच लो कि दोस्त अगर जावा में मुझे कुछ भी प्रिंट करना है, आई गो एंड मेक यूज ऑफ system.out.println and I go and put inside the hello world. ठीक है. और इस चीज को अगर मुझे अभी रन करना है तो व्हाट आई गो एंड डू, इफ आई गो एंड क्लिक ऑन दिस रन एज जावा एप्लीकेशन, ये प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड. एम आई क्लियर टू दिस पॉइंट? यस गणपत, आपको ना ये जो मैं नोट्स लिख रहा हूं वो आपको मिलेंगे. अपने तसल्ली के लिए आप जब ये देख रहे हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी करते रखो. आई थिंक दैट विल ऑल्सो हेल्प. ये रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जा रहा है तो यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा. Am I clear to this point? Everyone? Okay. So now, the next thing that we have to learn is the variables, right? तो पहले हम समझते हैं कि भैया variables क्या होता है, right? So let's talk about
वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या है? इफ आई गो एंड कीप इट वेरी सिंपल, वेरिएबल्स इज मोर ऑफ लाइक अ कंटेनर्स ऑफ डेटा। रियल वर्ल्ड एनालॉजी बोलूं तो अगर आप अपने किचन को जाके झांक कर देखोगे तो आप देखोगे कि मम्मी लोग ना क्या करती है, टू कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस, सॉल्ट, शुगर, वो एक डब्बा लेके आती हैं और उस डब्बे में मान लो शुगर को डाल दिया, तो जो डब्बा है विच इज द कंटेनर ऑफ शुगर, दैट्स टिपिकली इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ठीक है ना? अब आप, कुछ किचन्स होते हैं जहां पे आपने बॉक्स रख दिया है, देयर फ्यू नो kitchens where you have kept a box, and in this box you have kept inside this there is a sugar, but you have not named it, right? You just kept the sugar inside it, right? And there are certain kitchens where you have a box and then you have put a name also that this box is containing sugar. ठीक इसी तरीके से in certain programming languages when you go and define variables, if it is strongly typed, तो जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसी समय आपको बताना पड़ता है कि भैया उसका डेटा टाइप क्या है, कौन से डेटा टाइप का है वो। एंड इफ इट इज वीकली टाइप्ड, then you don't have to specify the no need to specify data type। आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जावा जो है सर वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जावा जो है वो इस वाले कैटेगरी से बिलोंग करता है। वो कहता है कि जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे तो वो कौन से टाइप का वेरिएबल है, नाम वहां पे लिखना जरूरी है। तो व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल इज जस्ट अ कंटेनर एंड इट स्पेसिफाइज द टाइप आल्सो, दैट ओके मैं किस टाइप का हूं। ठीक है? तो मान लीजिए अगर आपकी मम्मी जावा को फॉलो करके अपने किचन में चीजों को रखेंगी तो हर डब्बे पे वो नाम भी रखेंगे कि इस डब्बे में शुगर आएगा, इस डब्बे में सॉल्ट आएगा, इस डब्बे में दाल आएगी, राइट? एंड व्हेन यू डू दिस, व्हेन यू पुट द नेम एंड देन पुट द एग्जैक्ट आइटम इनसाइड दैट, that's typically how you follow the variable initialization and declaration in the world of Java. ठीक है? So now what we do is, YouTube channel name is Vishwa Mohan. You can search with the name Vishwa Mohan itself, Vishal. Now if I come and open this IntelliJ, sorry IntelliJ नहीं, मैं Eclipse पे लिख रहा हूँ अभी, right? So if I have to go and define a variable, let me go and define another class. Let me go and call it as, ये सारा कोड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा GitHub पे, so that you don't have to move here and there variables। कोई भी कोड अगर मुझे लिखना होगा तो मेरे पास एक मेन मेथड होना चाहिए, मैं बार बार इसको लिखूंगा आपके सामने ताकि ये आपके दिमाग में घुस जाए। तो आई हैव टू गो एंड राइट पब्लिक स्टैटिक void main, and then it has to be string, and then it has to be args, right? So I have to go and define a variable. I go and define int age equals to 99। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो एज है, ये जो एज है, ये 99 वैल्यू है, ये जो दिख रहा है आपको ये है वेरिएबल, और ये जो इंट है आपका ये है डेटा टाइप। सो बेसिकली मतलब क्या है, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो मान लीजिए ये आपकी मेमोरी है, उस मेमोरी में एक स्पेस होगा ये जहां पे आपका 99 स्टोर हो रहा होगा, और स्पेस का जो नाम होगा इसको हम कह रहे हैं एज। Am I clear? Does it make sense, everyone? So this is how you go and define a variable in the world of
जावा, यू कैन डिफाइन अ वेरिएबल इन द वर्ल्ड ऑफ जावा, राइट। सिमिलरली अगर दूसरा वेरिएबल मैं बोलूं, मान लीजिए मैं नाम लिखना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू विश्व, फिर ठीक है। तो जब भी आपको वेरिएबल बनाना होगा दोस्त, आपको लिखना पड़ेगा this is a variable, this is a variable, these two are the data types, and these are the values. Am I clear? Does it make sense? अब ये जो वेरिएबल्स हैं दोस्त, अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का, ये ना तीन तरीके होते हैं, थ्री टाइप्स। पहला टाइप का जो वेरिएबल है उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। मतलब कि जब भी एक वेरिएबल आप किसी मेथड के अंदर में डिफाइन कर देते हो उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। So for example, in this case, ये दोनों variables आपको दिखाई दे रहे हैं, this one and this one is inside this method called as main. So these are local variables. जब भी वेरिएबल एक मेथड के अंदर में डिफाइन होता है उसको हम कह देते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है ना। दूसरा टाइप का जो वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल, और जो तीसरा टाइप होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अब स्टैटिक क्या है, इंस्टेंट क्या है, ज्यादा घबराओ मत, पर अभी के लिए जान लो कि ये होता क्या है। तो लोकल वेरिएबल तो इनसाइड द मेथड है, ये स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल है दैट शुड बी आउटसाइड द मेथड। तो ये दोनों जो चीजें हैं दैट शुड बी आउटसाइड मेथड। मेथड के बाहर में अगर इस वेरिएबल को मैं डिफाइन करूंगा तो मैं इसको बोलूंगा, तो ये अदर वो स्टैटिक होगा या तो इंस्टेंस होगा। तो फॉर एग्जांपल इस मेथड के बाहर में अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं, मैं अगर यहाँ पे बोल दूं int, and let me go and call it as int salary equals to 1000, right। तो ये जो आपको दिखा यहाँ पे, जहां पे मैंने कुछ भी प्रीफिक्स नहीं करा, इसको मैं बोलूंगा दिस इज माय इंस्टेंस वेरिएबल। और अगर इसको स्टैटिक वेरिएबल होना है देन आई विल हैव टू यूज अ कीवर्ड कॉल्ड एज स्टैटिक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैटिक and I go and say that string, and I go and get the country equals to India. अगर कोई वेरिएबल स्टैटिक है then it has to be prefixed with the keyword called as static, right, and this is the class or static। अब क्या सिग्निफिकेंस है इंस्टेंस वेरिएबल का और स्टैटिक वेरिएबल का, वक्त आते आपको बताया जाएगा, है ना। विल ट्राई टू क्रॉस द रिवर व्हेन वी आर नियर द ब्रिज, राइट। अभी के लिए आपको बस इतना मानना है कि दोस्त तीन तरीके के वेरिएबल्स हैं। लोकल वेरिएबल जो मेथड्स के अंदर होता है, और नॉन लोकल वेरिएबल्स इज ऑफ टू टाइप्स, इट कुड बी आइदर स्टैटिक, अगर स्टैटिक है तो प्रीफिक्स होगा स्टैटिक कीवर्ड से, या फिर बिना स्टैटिक है मतलब कि वो इंस्टेंस वेरिएबल है और वो भी मेथड के बाहर होगा। Am I clear till this point? Does it make sense? Everyone in the class? Bolo. So in this case, if you see here, this is a local variable. ठीक है ना? And this is a static, and this is a instance. Am I clear? Does it make sense? अब यहाँ पे इंटरव्यू में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे इंटरव्यू में आपसे यहाँ पे आपको गाइस लास्ट तक बने रहना पड़ेगा आपको, बीच बीच में जो छोड़ के जा रहे हो कोई फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज बीच बीच में ही कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इंटरव्यू कॉन्सेप्ट्स, ओके। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भैया ये जो लोकल वेरिएबल है यहाँ पे क्या मैं कीवर्ड स्टैटिक यूज कर सकता हूँ लोकल के अंदर में, ठीक है ना। तो अगर लोकल के अंदर में अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज करने की कोशिश करेंगे
तो ये आपको एरर देगा। लोकल में कभी भी आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हो, राइट? सो वन पॉइंट टू नोट हियर इज दैट व्हिच कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन इन इंटरव्यू इज दैट variables, or I can say that local variables can't be static. ठीक है, दिस इज द पॉइंट नंबर वन। दूसरा क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेगा क्या वेरिएबल को हमेशा इनिशियलाइज करना जरूरी है क्या? क्या मैं सिर्फ इंट सैलरी लिख सकता हूं अगर मैं इसको हटा दूं? कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। क्या मुझे लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी है? अब देखो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, पर यहां पे अगर आप देखोगे, राइट, तो लोकल वेरिएबल को अगर आप यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर दो ना, सिस आउट एंड लेट्स से दैट एज, लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। अगर आप लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करोगे, दिस नीड्स टू बी इनिशियलाइज्ड। So the local variable has to be initialized the moment you define it, but instance variable या फिर static variable में it is not needed at all. This is the point number two that I want you people to be aware of. ठीक है ना? So which variables are required to be initialized if it is a local variable? If it is not a local variable, then you don't need to initialize it. Fair enough. Am I clear? Now, third question that they can ask is that can two variables have same name? What do you guys think? Can two variables have the same name? Yes, no? Can the two variables have the same name? देखो अगर मैं यहां पे फिर से यहां पे ही इंट सैलरी करूंगा तो मुझे ये एरर देगा यहां पे। आई कैन नॉट हैव द सेम नेम, आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड इंट सैलरी, व्हेन आई गो एंड डिफाइन दिस डज नॉट अलाउ मी। तो यहाँ पे तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, राइट? इसको मैं कमेंट कर देता हूं। पर अगर मैं इसको इसके अंदर में लिखूं, आई गो एंड से दैट इंट सैलरी इज इक्वल टू 29, दिस इज अलाउड। Why it is allowed? Because this is a local variable. This is a local variable. इसका जो स्कोप है, इसका जो स्कोप है वो है इनसाइड मेथड। इसका जो स्कोप है वो सेम है, सेम आउटसाइड मेथड। So अगर सेम स्कोप में वेरिएबल है, you cannot have the same name, but if the scope is different, you can have the same variables, multiple variables with the same name. So the answer is that yes, same name is possible, but scope should be different. Am I clear, people? Does it make sense? बोलिए मित्रों। Is everyone clear till this point, guys? Once we have done that, now let's try to quickly talk about what are the naming conventions, naming rules for the variables in Java. Java में जो variables होते हैं उसको नाम लिखने के क्या क्या तरीके हैं, right? What are the rules? पहला रूल कहता है कि जावा में जो भी आप नाम लिखते हो उसमें या तो होगा ए से लेके कैपिटल जेड तक, या फिर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, या तो 0 से लेके 9 तक, या तो अंडरस्कोर या तो डॉलर साइन। इसके अलावा अगर कोई भी कैरेक्टर अगर आप यूज करोगे तो दैट विल बी नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं इंट
NANME equals to Vishwa. This is giving me a error because and जो है एक स्पेशल कैरेक्टर है which is not allowed. Am I clear? तो जावा में कोई भी जो वेरिएबल नेम है उसको बनाने के लिए आप सारे अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, ए से जेड तक, लोअर केस एंड बिगर केस. All the numeric values you can go and make use of. You can use either underscore or a dollar sign. इसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं. Am I clear? Does it make sense? दूसरा रूल कहता है कि नेम शुड always start with either alphabet or underscore और डॉलर साइन. नंबर से नहीं चालू हो सकता. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिखोगे तो चलेगा. दिस इज ओके. सॉरी, दिस इज, अगर ऐसे लिखोगे तो चलेगा ये. पर अगर आप वन को पहले अगर करना चाहो यहाँ पे, then it is not allowed. The first character should be only underscore और डॉलर. आप यहाँ पे अंडरस्कोर करोगे तो चलेगा, आप यहाँ पे डॉलर कर दोगे तो भी चलेगा. But if you put a numeric value, it's not allowed. So the first character has to be always start with underscore, dollar or an alphabet. That's point number 2. तीसरा पॉइंट कहता है कि name should not have any space. So for example, I cannot write something like this: string first name equals to Vishwa. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल दिया है दोस्त. दिस इज नॉट अलाउड, राइट? सो दिस इज नॉट अलाउड. चौथा रूल ये कहता है कि जावा में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं. कांट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड्स. जावा वालों ने अपने प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए कुछ कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं so that the program could be executed. Those keywords could be something like if, else, right? These are the few keywords, right? So those keywords which we have in the world of the Java, we should not use it for naming the variables. क्या क्या ये keywords अभी आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है. As we make progress, we'll keep on learning one of them one after another, and I think that should be easy enough to get it. But what you have to keep in mind is that we should not make use of any kind of reserved keywords. And the fifth important thing about the Java is a case sensitive language. 5 is Java is a case sensitive programming language. Java is a case sensitive programming language. मतलब कि अगर आपने लिखा string name equals to Vishwa और आपने लिखा string name equals to Mohan, both are same, but this is small and this is capital letter. Both are treated different. Right? This is a case sensitive programming language. So these are the naming conventions that you go and make use of when you're defining the variables in Java. So sometimes in your written test, they might give you a variable and they will try to check one of these rules. And if these rules are validated, you have to go and tell if it is the right variable name or not. Am I clear, people? Does it make sense? Everyone in the class? Is everyone in the class clear till this point? Does it make sense? That's all. We don't have to go too much. This is the all thing that you need to go and know about the variables. What are the key points? Variable is a container to store the data. Java is a strongly typed programming language. So when you go and define the variables, it has to be prefixed with the data type. There are 3 types of variables in Java. Local variable, which is defined inside a method. Then instance variables and the static variables. And then we talked about the rules. To define the variables in Java, it should only use alphabets, numeric values, and only 2 special symbols allowed, which is underscore and dollars. The first character could be only an alphabet or an underscore or a dollar sign. You cannot be numeric value. You cannot use keywords, you cannot use space, and Java is case sensitive.
Crystal clear till this point, people. Does it make sense? Everyone in the class, move on करे. चलिए नॉन स्टॉप करेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे, ठीक है ना. थोड़ा जल्दी खत्म कर दूंगा. Instead of 3 hours, we'll do it in 2.5 hours. But we'll do it non-stop. I want you guys to have that perseverance कि भाई 2.5 घंटे बैठ के पढ़ाई तो कर सकते हैं. और आप लोगों ने अच्छा enthusiasm दिखाया. तो I'm thinking to bring these kind of sessions more often, right? एक और चीज मैं कर रहा हूँ. I know that the placement season is on the round. तो एक मैं fully live हम एक कोर्स लेके आए. मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ब्रेक लेते ताकि आपको थोड़ा सा चेंज मिल जाए. एक अल्टीमेट प्लेसमेंट कोर्स लेके हम लेके आए. अल्टीमेट प्लेसमेंट कोर्स 3 महीने का है. थोड़ा सा फास्ट पेस है. 3 months. जहां पे कि हाँ एक 3 ट्रैक चलेगा आपका. दिस इज अ ट्रैक 1. ट्रैक 1 में हम आपको पढ़ा रहे होंगे जावा, बीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस एंड सिस्टम डिजाइन. ये पूरा का पूरा लाइव होगा. 4 days पर वीक. ट्रैक 2 में आप अगर एफएसडी कर रहे हो या फिर डेटा साइंस कर रहे हो, ये भी आपको करने मिलेगा. ये होगा रिकॉर्डेड प्लस लाइव. एंड देयर इज अ ट्रैक 2, ट्रैक 3, राइट. यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल्स, लिंक्डइन, ये सारी चीजें फॉर द प्लेसमेंट रेडनेस एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. वन टाइम एक ही बार एक ही बैच चलाएंगे. तो आप या आपकी कोई भी दोस्त अगर इंटरेस्टेड, इट्स एट हार्डली प्राइस ऑफ ₹4,000 plus GST. We are taking the enrollment for the next 5 days only. एक ही बैच बनाएंगे, मल्टीपल बैचेस नहीं है. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड टेक दिस. नाउ कमिंग बैक, हमने वेरिएबल्स कर लिया. कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे. हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस करा है. कैन यू गाइस हेल्प मी गेट द आंसर ऑफ दिस? कैन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजिंग इट? व्हाट इज द आंसर टू दिस? Can you declare a variable without initializing it? Yes, very nice. Very nice, very good. Yes, if it's not a local variable. जो local variable नहीं है, it could fall into one of the two types. It could be either one static variable or it could be a instance variable. ठीक है. Now, once we have done this, the next one that we need to talk about is called as a data types. It's very important to understand that what are the different types of the data types that we have. Data types in Java. Java में अगर मैं बात करूं डेटा टाइप्स की, on a high level there are of two types. दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं जावा में. पहला टाइप जो है उसको बोलते हैं प्रीमिटिव. First one is called as a primitive data type, and the second one is called as non-primitive data types. Primitive वो data types है, they're very, they're very core or basic. They're already defined in Java, already defined in Java. ये वो डेटा टाइप्स है जो आपको सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे. Primitive data types are those data types which is present in almost every programming language of this earth. They're very core, they're very basic, they're very simple. Example of that could be primitive data type will include one. Let's say that it could be numeric data type.
And the numeric itself could have two types. So it could be integers. And integer mein you will have something called as byte, short, int, and long. And then you have something called as a floating type. For example, float, and then you have something called as double. So primitive में एक आपका न्यूमरिक हो गया, दूसरा जो हो गया नॉन न्यूमरिक. नॉन न्यूमेरिक, इसमें आपका एक आ जाता है बुलियन और दूसरा आ जाता है कैर. So these are the different data types that we have. What are the primitive? I'm again repeating. These are those data types which are very simple. They're very core. They're very basic, and it is present in almost every programming language. Right? There are two types of primitive data types. Numeric. Numeric में दो इंटीजर वाले न्यूमरिक्स और जिसमें डेसिमल पॉइंट्स हैं. न्यूमरिक वाले में बाइट आ गया, शॉर्ट आ गया, इंट आ गया, लॉन्ग आ गया. फ्लोट वाले में फ्लोट हो गया और डबल हो गया. नॉन न्यूमरिक डेटा टाइप में एक तो बुलियन है और दूसरा है आपका कैर. राइट? नॉन न्यूमरिक डेटा टाइप में एक आपका बुलियन है और दूसरा है आपका कैर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. Fair people, does it make sense? Am I clear till this point? Okay, perfectly fine. Non-primitive data types are those data types who are little complex. This can be user defined. Example of the non-primitive data types could be class, string, array, user defined classes. These are called non-primitive data types. अभी के लिए जितना हमें पता है इंफॉर्मेशन, अभी के लिए जितना इंफॉर्मेशन हमें अभी पता है, we are gonna primarily focus on the primitive data types. तो चलिए चालू करते हैं primitive data types से. ठीक है ना? So I'll start quickly on the code panel itself. Let me go and start the Eclipse. और यहाँ Eclipse में अपन क्या करते हैं? Let me go and define new class and let me go and call it as data types. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ public static void main string args. सबसे पहले देखते हैं सर न्यूमेरिक डेटा टाइप. न्यूमेरिक डेटा टाइप. न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहले जो अपन देखेंगे वो देखेंगे अपन इंटीग्रल डेटा टाइप. इंटीग्रल डेटा टाइप. इंटीग्रल डेटा टाइप इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो सबसे छोटा इंटीग्रल डेटा टाइप जो है उसको हम कहते हैं बाइट. बाइट i1 is equals to 2. एक क्विक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ लूं. ये जो डेटा टाइप दिख रहा है दोस्त, ये जो डेटा टाइप दिख रहा है वो कौन सा डेटा टाइप है? इज इट लोकल, इज इट इंस्टेंस, इट इज स्टैटिक? व्हिच टाइप ऑफ डेटा टाइप इट इज? i1 is equals to 2. इट्स अ लोकल डेटा टाइप. परफेक्टली फाइन. लोकल डेटा टाइप है तो इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा. सबसे इंटीजर को स्टोर करने के लिए आपके अलग अलग कंटेनर्स हैं और हर एक कंटेनर का साइज अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल आप किचन में जैसे देखते होंगे, राइट? हल्दी रखने का जो डब्बा होगा वो छोटा होगा, चीनी रखने का उससे बड़ा होगा, और अगर आपको राइस रखना है 10 kg का तो उसका जो डब्बा होगा वो ज्यादा बड़ा होगा. So depending on what kind of integral value that I want to go and store, which size of the integer, I go and decide the box size itself. So byte is the smallest. For example, in this case, if I keep on increasing the size, if it is 9, it is all fine. If I go and increase to 99, it is still fine. But if I go and increase by further one, you see that I start getting the red. So byte can only go and store data up to a certain size. उससे बड़ा अगर size हो जाएगा, then I'll not be able to store into the byte. So it will only go and store till this point. If you have to go and store a bigger number than this, then I have to use something called as short. I2 is equals to, again, short is a size which is bigger than byte, so it will be able to store bigger values. If I go and take 9 here, it will be able to store. If I take another 9, it starts giving me the error. So short का भी एक size है, but it's bigger than byte, but beyond which it will start giving me the error.
अगर मुझे short से आगे जाना है, then I have something called as a int. I go and call it as I3, and then I can go and store the more values. I can still go bigger, 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 and now I'm getting the error. So every integral type has a max size beyond which if you go and it will start giving you the error itself. Now, why I need to have the byte, short, and the int? Because if you go and decide a variable of a type int, it occupies bigger space. It's like normally बैंगलोर की सड़कों पे इतना ट्रैफिक क्यों है आपको पता है? बिकॉज लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां एसयूवीज लेके अकेले निकल जाते हैं रोड पे. पूरे एसयूवी में जो कि 7 सीटर है, एक ही बंदा ड्राइव कर रहा है, बट ही इज ऑक्युपाइंग टू मच ऑफ स्पेस, एंड दैट्स व्हाई देयर सो मच ऑफ ट्रैफिक जैम. प्रोग्रामिंग हमने इसको पहले से सॉर्ट कर रखा है कि अगर छोटा नंबर है स्टोर करने के लिए आप छोटा डेटा टाइप यूज करो, बड़ा नंबर है तो उसको स्टोर करने के लिए आप बड़ा नंबर स्टोर करो. हर एक का अपना एक साइज होता है सर. यू डोंट हैव टू मग अप और रिमेंबर, आई एम जस्ट टेलिंग यू. बट बस आप रिलेटिवली अगर ध्यान रखोगे सबसे छोटा बाइट फिर शॉर्ट फिर एंड, दैट इट मेक सेंस फॉर यू. पर आपके FYI के लिए मैं आपको बता दूं, बाइट कैन गो एंड स्टोर द 8 बिट्स ऑफ नंबर, दिस कैन स्टोर 16 बिट्स, एंड I3 कैन स्टोर 32 बिट्स ऑफ नंबर. या रतिकांत, am I clear, Ashwini? Now, if I have to go beyond int, I have something called as long. I go and call it as I4 equals to na da 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 da. And here you see that it's going beyond the integer का limit, going beyond. जैसे मैं integer के beyond जाता हूँ, मुझे इसको long की तरह show करना है, तो I have to go and suffix with the keyword called as L, which indicates that it is a long number. Right? I can keep on increasing, 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 but this also has an upper limit. When you go beyond it, it will start throwing me number. If I have to go beyond long, there's something called as a big integer, which is a class in Java, which we'll talk later on. But right now we understand that we will have to deal with one of these 4: byte, short, int, or long, if you have to go and store the integers. Am I clear, people? Does it make sense? Is everyone clear on all these 4? This comprises of 8 bits. This comprises of 16 bits. This comprises of 32 bits. And this comprises of 64 bits. Am I clear? Is everyone in the class crystal clear with me? Does it make sense, everyone? बोलो हाँ या ना. समझ में आ रहा है सबको? Fair. चलिए, very nice. Let's move on further. तो ये 4 हमने कर लिया. इंटीग्रल डेटा टाइप्स के बाद जो दूसरा डेटा टाइप्स अपने पास आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ floating point data types or a decimal data types, right? So I have something called as a floating point data types. इसके दो वेरिएशंस है. पहला वेरिएशन लिखते हैं फ्लोट नंबर. फ्लोट इज f is equals to 1.2 f. ठीक है. कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट अगर नंबर होगा तो उसको आपको सफिक्स करना पड़ेगा f कीवर्ड से. अब यहाँ पे इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इज इट मैंडेटरी टू सफिक्स with f always in floating numbers? देखो, अगर मैं यहाँ पे f हटा दूं तो it will start throwing me error. What is the answer, sir? What do you guys think? What do you guys think? Is it mandatory or it is not mandatory? What do you guys think? All the Java geeks in the house. When Anuj is saying mandatory, Rajesh is saying no. When it is not mandatory, Rajesh, in that case? अगर ये नंबर आपने डेसिमल नहीं लिखा हुआ है, if you remove this decimal point, then f is not mandatory. F is mandatory only if this value is actually having a decimal point in between.
ठीक है, am I clear? Does it make sense? The second way of defining a floating point number is using the double d is equals to 1 point. In Java, decimal numbers, floating point numbers could be defined in two ways. You go and define it like this: float f equals to 1.2f, or you go and define it as double d is equals to 1.2. These are the two ways. Both are floating point numbers, but then the question is why we need two? Or what is the difference between these two? What is the difference? What is the difference between these two? Again, this is a very common question that I normally see being asked in the interviews. The difference is double has higher precisions. It's double precision actually, double precision. This has lower precision. Since it is a higher precision, it will take more space. More space it will take. This will take less space. So in all those kind of scientific calculation where the higher precision in the decimal number is needed, you go in with the double. But in the case if you can deal with the approximation so that you can save some space, the float is more relevant option. Let's try to see that how it works. I'll take an example to prove this. So let's say that I have a floating number f1 is equals to 1.123456789, right? F. And then I go the similar number double d1 is equals to 1.123456789. If I go and print these two numbers this out, and I go and set that f1, and I go and do this out, d1. If I go and run this, run as, you see here, जो पहला नंबर है फ्लोट, उसको मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ये जो 7 8 9 है उसको उसने अप्रोक्सीमेट करके 8 लिख दिया है, राइट? कैन यू सी दिस? When I use float, it has been approximated. But when I use double, it is high precision, right? So double numbers of the high precisions and the floating points of the lower precision. That's why we go and make use of. Am I clear, people? Does it make sense? Everyone in the class? Bolo, is everyone in the class clear till this point, guys and girls? Awesome, very nice. Let's move further. So numerical data types हमारे हो गए हैं. And let's move to the non-numerical data types. Let's move to the non-numerical data types. Let's move to the non-numerical data types. So non-numerical data types में जो पहला है वो है boolean. Boolean का मतलब होता है सच या झूठ, ट्रू या फॉल्स. Boolean के लिए डेटा टाइप Boolean है, and I say that C agreed equals to false. जो दूसरी पॉसिबल है Boolean C denied. Boolean डेटा टाइप्स को यूज करने के लिए वेरिएबल आप जो डिफाइन करते हैं, आपको एक प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है which is Boolean. Value could be either false or it could be true. And it has to be either of one of these two things. It cannot be say that अब true के बदले में मान लीजिए आपने लिख दिया 1. It will not accept that. Now in some programming language it does. For example, programming language like JavaScript, it's not only pure true but it's truly and falsely, right?
So any number which is non-negative is considered as true. But here in this case of Java, it could be either only true or it has to be false. There is no other interpretation. So it could be either false or it has to be true, right? So that's how the Boolean data type looks like. The another one which is pending in the primitive data type that we have to deal with is called as characters. Okay, na? So every possible character of all the different languages in this world, of all the different countries, we have a we go and represent by something called as char C1 is equals to A. Char C1 is equals to A, right? And this is how you go and store the characters. Now, one important thing about this character is that in the case of Java, you use something called as a Unicode encoding. You use something called as a Unicode encoding. You use something called as a Unicode encoding और Unicode character encoding. आप ऐसे कुछ लोगों ने ये भी वर्ड सुना होगा, ASCII. Now my question to you people is that very logical. That first of all, what is character encoding? Anyone in the class who help me understand? What is character encoding? ब्रेक नहीं दूंगा आज मैं. आज 20-25 मिनट मेरे साथ और बियर करो. विल क्लोज द क्लास एट 1:30 एंड विल कंटिन्यू टुमारो. और मान लो कल अगर खत्म नहीं भी होता है तो अगले हफ्ते फिर से कंटिन्यू करेंगे. माय होल इंटेंशन इज नॉट टू जस्ट रन अवे एंड गो. एवरी कॉन्सेप्ट विल गो इन डीप इन डिटेल सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस इज द ओनली वन स्टॉप दैट आई हैव टू गो एंड लर्न. आधे घंटे और दे दो, ठीक है ना? और प्लीज होल्ड ऑन फॉर 30 मिनट्स एंड आई विल क्लोज एट 1:30 मिनट्स, ठीक है? What is the character encoding? Very nice. देखो क्या होता है कि कंप्यूटर दोस्त समझता है भाषा 0 and 1 की, right? And in the world there are different languages. उस लैंग्वेजेस के जो कैरेक्टर्स हैं उसको अल्टीमेटली आपको कन्वर्ट करना है 0 and 1 में ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए. तो जो कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है उसको ही हम कहते हैं एनकोडिंग, ठीक है ना? दुनिया में कई तरीके के एनकोडिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, राइट? फॉर एग्जांपल, बिकॉज इन द वर्ल्ड ऑफ द कोडिंग अमेरिकन्स हैज अ डोमिनेशन, राइट? सो अमेरिकन सेड दैट बॉस विल फॉलो दिस ASCII. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. अमेरिकन ने बोला बॉस मेरा कोड पे दबदबा है तो पूरी दुनिया इसको फॉलो करे. इससे फायदा क्या होगा कि अमेरिका में जितनी सारे बोलियां बोली जाती थी, जितने सारे लैंग्वेजेस थे, उन सारे चीजों को तो हमने कन्वर्ट कर दिया था कंप्यूटर के एनकोडिंग में. बट देयर इज वर्ल्ड बियॉन्ड अमेरिकन्स आल्सो एंड देयर इज अ वर्ल्ड व्हिच डज नॉट ऑब्लाइज विद अमेरिका. फॉर एग्जांपल, रशिया बोला कि बॉस मैं क्यों तुम्हें मानूं, राइट? रशिया ने बोला कि बॉस मैं तो अमेरिका को नहीं समझने वाला हूं, मैं अपनी इनकोडिंग बनाऊंगा. तो रशियंस ने बना लिया KOI8, राइट? दिस वाज बीइंग यूज्ड बाय रशिया. चाइनीज ने बोला बॉस हम तो अलग ही सुपर पावर है, right? Why should I go and follow the Americans and the Russians? I should use my own. So they made something called as Big Five. This was done by the Chinese. And like this, there were multiple encoding standards. Now Java people, they realize that boss, if I go and follow any of these, ऐसा हो सकता है कि अमेरिकन का सारा हो गया, but remaining world I'm not able to go and capture. So in order to bring the uniformity so that all the languages of the world could be encoded in the 0 and 1 format, so that none of these things are lost, they followed an approach called as a Unicode standard. Right? They followed an approach called as Unicode. Unicode was universal. And it aims कि दुनिया के जितने भी characters है, no matter which country, no matter which part of the globe you are able to go and convert
every character into the 0 and 1 itself. That's what the so Java is following the Unicode characters, right? And this Unicode could be 8 bits, 16 bits, or 32 bits, right? So Java by default follow the 16 bits Unicode character encoding. Fair enough. Am I clear, people? Does it make sense? So what I mean here is that if I go and open my Eclipse, अगर मैं Eclipse को ओपन करूं तो C1 जो है वो कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है, पर C1 में आप ना एक न्यूमर की वैल्यू भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल char C2 इक्वल्स टू 98. अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं, sys out, and I go and print C2, and if I go and run this, run as the value is B, right? तो जो C2 का 98 है बेसिकली, राइट, वो उसका यूनिकोड एनकोडिंग बता रहा है कि बॉस जो 98 है, 98 is representing character B. अंशु आप टेंशन मत लो, ठीक है ना? वी हैव लेस टाइम. ये सारी चीजें यूट्यूब पे जा रही है, ठीक है ना? तो जहां जहां पे भी आपको डाउट्स है, आप प्लीज नोट बना लीजिए, वापस जाके देख लेना फिर से, ठीक है ना? एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम पुटिंग ओवर द यूट्यूब, सो दैट ऑल यू पीपल, if you have any doubts, you want to go and revisit, please go and watch that section and then come prepared in the next session. कल आने से पहले मैं चाहता हूँ पूरा वीडियो आप यूट्यूब पे एक बार और फिर से आप सभी देख लीजिए. This is available on the channel Vishwa Mohan, राइट सर? अगर आप, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा आप मेहनत करो. कल आने से पहले आप सारा कुछ रिवाइज करके आना. ऑन आवर यूट्यूब चैनल नेम इज विश्व मोहन, जहां पे ये अभी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, वहां पे भी पड़ा होगा. यू गो एंड प्लीज वॉच दैट, ठीक है? अंशु वर्क्स. So these are the different types of data types that we have in Java. तो इसी के साथ हमारा सेकेंड पड़ाव खत्म होता है. इसमें हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है? हमने अभी तक कर लिया है वेरिएबल्स, और हमने कर लिया है डेटा टाइप. एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर टिल दिस पॉइंट? Anybody has any small chotu motu iota or that, please let me know. Everyone is crystal clear, guys? बताइए दोस्तों, इज एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर? चलिए एक और टॉपिक आज करेंगे और उसके बाद विश्राम लेंगे, और अगला टॉपिक है which is called as operators. Next topic is called as operators और operations. कुछ एक टर्म है, मान लीजिए मैंने अगर एक्सप्रेशन ऐसा लिखा 3+4, इस वाले एक्सप्रेशन में ये जो नंबर है इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेंड. दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड, एंड दिस इज व्हाट यू सी इज कॉल्ड एज अ ऑपरेटर, ठीक है ना? ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इसमें ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ऑपरेंड, और ये जो प्लस सिंबल देख रहा है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर, राइट? दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. जावा की दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं. क्या क्या है डायरेक्टली कोड से ही देखेंगे. एक बार ओपन माय एक्लिप्स. यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं. लेट मी गो एंड कॉल इट एज ऑपरेटर्स डॉट, ठीक है? ऑपरेटर्स है, कोड लिखना चालू करना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, है ना सर? ठीक है, हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args. ऑसम, वेरी नाइस. एंड नाउ इसके अंदर में क्या करें? इसके अंदर में हमने सबसे ऑपरेटर सब लिखना चालू करते हैं. मैं देख लूं यूट्यूब पे क्या चल रहा है. ओके, सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा मैथमेटिकल ऑपरेटर. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर वो सारी चीजें आपने देख रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, राइट? क्विकली अगर मैं इसको लिखूं, सिस आउट, let's say that I can go and write something called as, let's say that I have a number called as int a equals to 10, int b is equals to 2, then I can go and call it as a plus b. This is the addition, right? दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, a minus b. तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग a into b कर सकते हैं.
सिंपल a इंटू बी। और क्या कर सकते हैं, a डिवाइडेड बाई बी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं a एम% बी। अब आंसर बताते जाओ मुझे क्विकली। पहले का आंसर क्या होगा, व्हाट विल गेट प्रिंटेड बॉस, मुझे देखने दो आप लोग कितना मैथ जानते हो। व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस, 12। वेरी नाइस। व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस, a minus b is 8. What will the answer of this, 20. What will the answer of this, will be 5. What will the answer of this, 0. So this gets me the quotient, and this gets me the remainder. Awesome guys, very nice, very cool. Let's try to go and run this. If I go and run this, run as, I'm getting the same answer. Perfectly fine. So these are the basic mathematical functions, right? Then I have a assignment operators, assignment operators. इसको मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब क्या है कि मैं अगर a में 5 बढ़ाना चाहता हूं तो मैं क्या लिखता हूँ, a इक्वल टू a+5, राइट। इसका अगर मैं शॉर्टकट लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, i इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 5। दिस इज जस्ट अ syntactical sugar, this is just a syntactical sugar, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली आप खाने में नमक ऐसे डाल देते हो, है ना, पर जो कुछ अमेरिकन शेफ्स हैं वो नमक ऐसे डालते हैं, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता स्वाद पे, इट्स जस्ट अ सिंटैक्टिकल सुगर, द वे यू गो एंड रिप्रेजेंट इट। सो दिस इज अ सिंटैक्टिकल सुगर, अ फैंसी वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, a इक्वल्स टू a+5। अगर आप a इक्वल्स टू a+5 लिखते हो परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन स्टिल कंटिन्यू डू इट, बट दिस इज अनदर फैंसी वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। सो गाइस कैन यू टेल मी, अगर मुझे लिखना होगा, अगर मैं ये लिखना चाहता हूं a इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 9, इसको मैं फैंसी तरीके से कैसे लिख सकता हूं, कैन यू गाइस पुट दैट इनटू द चैट। a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 9 को अगर मुझे फैंसी तरीके से लिखना होगा, हाउ डू आई राइट इट, वेरी नाइस, इट विल बी a इक्वल्स टू 9। So this thing works for all the mathematical operators. This will work for all the mathematical operators. Very nice. Cool है। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया मेरा पहला, वेरी कूल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है मैं इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड द प्री इंक्रीमेंट, राइट। लेट्स से दैट आई हैव अ नंबर कॉल्ड एज int I इज इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको लिखूं i प्लस प्लस और मैं लिखूं प्लस प्लस आई, ठीक है ना, इसको कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट और इसको बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों में वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूं सिस आउट, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूं आई, और फिर मैं यहाँ पे अगर करूं सिस आउट और यहाँ पे प्रिंट करूं आई, दोनों में वैल्यू ऑफ आई इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल इसको मैं रन कर दूं, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आप देख रहे हो बॉस यहाँ पे आई की वैल्यू 5 थी, और जब मैंने आई प्लस प्लस वैल्यू बढ़ के हो गई क्या 6, और फिर से जब प्लस प्लस बड़ी बढ़ के हो गई 7। पर प्री इंक्रीमेंट में क्या है सर, इस बात को अगर मैं फॉलो करूं तो इसका मतलब होता है फर्स्ट यूज एंड देन इंक्रीमेंट, और इसका मतलब होता है फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड देन यूज। आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा, पहले आई है और फिर प्लस प्लस बाद में, यहाँ पे प्लस प्लस पहले, पहले इंक्रीमेंट और देन आई वन मेक यूज ऑफ आई। एम आई क्लियर पीपल, डज मेक सेंस। आई प्लस प्लस में यू फर्स्ट यूज आई एंड देन यू इंक्रीमेंट इट, प्लस प्लस आई में यू फर्स्ट इंक्रीमेंट इट एंड देन यू यूज इट। नो सही लिखा हुआ है। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट, बोलिए दोस्तों। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया है। ये होगा प्री इंक्रीमेंट और ये होगा पोस्ट इंक्रीमेंट, यू आर राइट। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट एवरीवन।
चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, लेट मी सी दैट हाउ स्मार्ट यू पीपल आर. ठीक है, so let's say that question comes on your screen now. Da 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 da. I go and write that int x is equals to 5, and then I have int y is equals to x plus 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 x plus x plus plus. Okay, and then I have to go and print sys out x sys out y. एक काम करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ. क्रैश हो गया ये. ओके, नो. वन सेकेंड यार, है ना, दिस गॉट क्रैश्ड. ठीक है, आप लोगों को ये दिख रहा है? लेट मी पुट इट हियर. Can you guys tell me what will be the value of x and what will be the value of y here? Please calculate and put that into the chat. Very nice. I see a lot of people are answering me the question. आप please एक बार try करिए आप सभी कोई. अब इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं बॉस. दिस इज x इज इक्वल टू 5. ठीक है ना, यहाँ पे पहले यूज करना है और फिर इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 और x की वैल्यू अब बढ़ के हो गई है 6. यहाँ पे x पहले इंक्रीज होगा और फिर यूज होगा, तो x की वैल्यू 6 थी तो ये हो गया 7. तो 7 मैं यहाँ पे यूज करूंगा और x की वैल्यू बढ़ के हो गई है 7. यहाँ पे मैं पहले 7 यूज करूंगा और इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो जाएगी 8. तो y की वैल्यू आएगी 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 90, और x की जो वैल्यू आएगी वो बढ़ के हो जाएगी 8. So this should go and print me 8 and this should go and print me 19. Am I clear, everyone? Is everyone in the class clear with this notation? Is everyone in the class crystal clear with what we have just discussed right now? बोलो. Right? Run करके देख ले एक बार. Eclipse. Let me go and run this. Run as Java application. And it's saying 8 and 19. X is 8 and Y is 19. एक और क्वेश्चन करें. I see few of the people have done it very wrong. Shall we do one more question? एक और क्वेश्चन करें सर. Please focus से करोगे. We'll be able to solve this well. Okay. The next question is int A1 is equals to 5 and B1 is equals to A1 minus A1 plus A1 minus A1 minus A1 plus A1 minus. This is B1. You have to go and print syst out A1 and you have to print sys out B1. Can you guys tell me what will be the answer here? What will the answer here, guys? A1 की वैल्यू कितनी होगी और B1 की वैल्यू कितनी होगी? X y कहाँ है दोस्त? यहाँ पे तो A1 B1 है. Here we have A1 and B1.
लेट्स ट्राई टू सी दिस। यहाँ पे पहले वैल्यू यूज होगी और उसके बाद डिक्रीमेंट होगी, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5 यूज, और A1 की वैल्यू घट के हो जाएगी अब 4। यहाँ पे पहले वैल्यू रिड्यूस होगी और फिर यूज होगी, तो वैल्यू घट के हो गई है 3, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा 3। और यहाँ पे वैल्यू यूज होगी पहली और फिर डिक्रीमेंट होगी, तो डिक्रीमेंट होके वैल्यू हो जाएगी 2। तो वैल्यू कितनी आई? 5 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। और A1 की वैल्यू घट के हो जाएगी 2। Is everyone crystal clear till this point? I see most of you have been able to give me the very right answer. Is everyone clear till this point? Bolo dosto. Is everyone clear? If I go and run this, run as Java application, and this get me the value 25. Next thing that we have is we have something called as logical operators. लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं? आप लोगों ने अगर बीटेक करा है और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो देयर वी यूज्ड टू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ लॉजिकल गेट्स. There are primarily three different types of, or four different types of the logical operators. One is called as AND. Another one is called as OR. The third is called as XOR, and then called as NOT. These are the four different logical operators that we're gonna learn. एंड क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, राइट? अगर मैं इसके बीच में एंड लगाऊंगा जो डबल अपर्चर करता है, तो उसकी वैल्यू आएगी हमेशा फॉल्स. अगर पहला वाला फॉल्स है और दूसरा वाला ट्रू है, देन इट विल बी आल्सो फॉल्स. इफ बोथ आर ट्रू, देन ओनली इट विल बी ट्रू. इफ बोथ आर फॉल्स, देन आल्सो इट विल बी द फॉल्स. सो एंड ऑपरेटर आपको बताता है फॉर इट इज टू बी true, both the operands has to be true. This is for the and. On the other hand, if I have something called as or, t double pipe shows the or, false, it will be true. False, true, it will be true. If both are true, then also it is true. If both are false, then only it is false. This what you have is the and operate or operator. This is for the or operator. Then I have something called as XOR operator, right? Then I have something called as a XOR operator. So if I have a true and the false, I go and represent this value will be true. If it is false and the true, the value will be true. If both are same, then it will be false. If both are false, then also it will be the false. This is my XOR operator. XOR operator says that both has to be different. Both are different, that it true. Both are different, that's true. But both are same, that will be false, right? This is my XOR operator. And then I have something called as a not operator. So for example, if it's true and I go and put there, this value will be false. If I go and put false, put here, and this value will be the true. These are the four different types of the logical operators that we have. Am I clear till this point, people? Does it make sense? Fair? यहां तक मेरा यूनरी ऑपरेटर है. इसके बाइनरी ऑपरेटर नो. इसके बाद वाली जो चीजें आती है, विच इज एट द बाइनरी लेवल ऑपरेटर्स. यहां के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बाइनरी नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स, 0 and 1 की दुनिया. यहां पे मैं आपको थोड़ा मैथ्स बताऊंगा, जिसके लिए अपने को चाहिए थोड़ा सा टाइम. आई एम सीइंग दैट वी आर नियरिंग, इट्स 1:24 राइट नाउ, सो वी आर नियरिंग इट. तो हम लोग यहाँ पे आज लेते हैं पॉज, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेस यू. व्हेन यू कम टुमारो, या तो बाइनरी नंबर पढ़ के आना पहले से, नहीं तो स्टार्टिंग में आई विल टीच यू, एंड देन वी गो एंड टॉक अबाउट द यूनरी ऑपरेटर्स, राइट? दैट हाउ डज दैट वर्क, right? How the left shift, how the right shift, how the complement, how all those things internally works. It's very interesting because that makes things faster. 90% लोग जब ये पढ़ते हैं ऑपरेटर्स में, वो स्किप कर देते हैं, बिकॉज या तो उनको टफ लगता है या तो उनको समझ में नहीं आता. अपन क्या करेंगे, विल गो डीपर इनटू इट, विल मेक थिंग्स सुपर इजी एंड वी मास्टर इट, बिकॉज वहां से क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में निकल के आएंगे. ठीक है? सो वी टेक अ पॉज हियर, बट
I want a promise from you people is that you guys are coming back tomorrow, making sure that we are just nailing the topic. कल 2 दिन में शायद खत्म ना हो, अगले वीकेंड फिर चालू करेंगे, but we'll make sure that we are doing this class till the time each one of you are coming, and we are making sure that we are doing super solid preparation for the Javas for the interviews. Done. Can I expect that? I want you people attendance on the YouTube video also. Please comment there so that more and more people are benefited. Please go and tell your friends in your college. This is free. The only intention I'm trying to do is I'm trying to reach out to as much people as possible just to make sure that they're ready for the placements. And if I see a good energy and enthusiasm in these courses, I'll bring more topics. I'll bring DSA, I'll bring operating system, I'll bring networking, I'll bring system design, I'll bring aptitude, I'll bring everything which makes sure that you're all set for the interview preparation. As you know, Lohit, I can, but typically what happens, many of the people are saying that they're tired. It's only 2.5 hours. As per the human brain, it takes a lot of time. So I'll do it tomorrow. We'll solve a lot of problems, Lohit. Make sure that you attend tomorrow. We'll solve a lot of problems. Tomorrow we'll do a lot of hands-on questions and we'll make sure that we do it well. Okay. Thank you, everyone. It was fun talking to you guys. It was really lovely. Uh, as I said, I'm committed to bring more topics, everything which is needed on one roof for your placement preparation, that too for free. We'll work it out. But for that, I'll need your support, your comment. Please put that into the comments. Let me know how it works. If you feel it is helping out, please write a post over the LinkedIn, tag me there. I read each one of your posts. If it helps, it will promote others, motivate others to also join. Thank you, everyone. Have a great day. Perfect. Thank you. ठीक है सूर्या, noted.